Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Hope so you are doing well. In this video we are going to read and translate the remaining portion of Unit 1, The Savior of Mankind of Class 9. Let's move to our lesson. In the previous lesson we have translated 5 paragraphs of this lesson. Now we are going to start from the paragraph number 6. The revelation of the divine message. Revelation वही of the divine message. इलाही के पैगाम की वही which continued for the next 23 years had begun. जिसने अगले 23 साल तक जारी रहना था अब शुरू हो चुकी थी. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह. प्रोक्लेम दावा करने के लिए, द वननेस यकताई का, ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की. तौहीद. तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला की यकताई या अल्लाह ताला को एक मान. इलाही के पैगाम की वही जिसमें अगले 23 साल तक जारी रहना था अब शुरू हो चुकी थी. और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे अल्लाह ताला की यकताई का दावा करने के लिए एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तिहाद के लिए. हिज मिशन, उनका मकसद वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन. उनका मकसद था तबाह करना नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के अकायद, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ्स और गलत अकायद, एंड सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन और एक अच्छा तस्वुर कायम करना था ऑफ लाइफ जिंदगी का, एंड लीड मैनकाइंड और इंसानियत की रहनुमाई करनी थी टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन प्लीज, ईमान की रोशनी में और अल्लाह ताला के पैगाम के मुताबिक. सिंस, अगरचे दिस बिलीफ ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग खतरे में डाल रहा था देयर डोमिनेंस उनके इक़्तिदार को इन सोसाइटी माशरे में. द पिजन कुफार अरब्स अरब के कुफार स्टार्टेड शुरू हो चुके थे टू माउंट प्रेशर दबाव डालना ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एंड हिज फॉलोअर्स और उनके पैरोकारों पर. अगरचे ये अकीदा माशरे में उनके इक़्तिदार के लिए खतरनाक था. अरब के कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर चुके थे. They wanted them to renounce their cause. वो चाहते थे कि वो ये वजह छोड़ दें, renounce तर्क कर दें, their cause उनकी वजह, and take to idol worshipping और बुतों की पूजा शुरू कर दें, worship इबादत करना. On one occasion एक मौका पर they sent a delegation उन्होंने अपना वफ्द भेजा to रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kind and caring uncle रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमदिल और मोहब्बत करने वाले, परवाह करने वाले चचा की तरफ, अबू तालिब. एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और परवाह करने वाले चचा अबू तालिब की तरफ एक वफ्द भेजा. They told him उन्होंने उन्हें बताया टू रिस्ट्रेन रोकने के लिए द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग तबलीग करने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अलमाइटीज मैसेज अल्लाह ताला के पैगाम की और फेस देयर इनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करें. उन्होंने उन्हें बताया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से या उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलीमा खुद को दोहरी मुश्किल में पाकर he sent for his nephew उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया and explained to him the situation और सारी सूरत हाल की वजाहत की. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया. My dear uncle मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें and the moon in my left और मेरे बाएं हाथ में चांद, even then हत्ता के तब भी I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah मैं तब भी अल्लाह ताला की यकताई के दावे को तर्क नहीं करूंगा. तौहीद. I shall set up the true faith मैं हकीकी ईमान कायम करूंगा upon the earth जमीन पर और perish in the attempt या इसी कोशिश में मर जाऊंगा. मेरे प्यारे चचा जान अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तब भी
میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے دعوے کو ختم نہیں کروں گا، میں زمین پر حقیقی عقیدہ قائم کروں گا یا اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ The Rasul's uncle, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان was so impressed with his nephew's firm determination. بہت متاثر ہوئے اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go the way اسی راستے پر جاؤ none will dare touch thee کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا I shall never forsake thee میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا and the Rasul did go the way اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر گئے اللہ Almighty had chosen for him جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا imbued with divine guidance اللہ تعالیٰ کے الہی کی رہنمائی سے سرشار ہو کر and firm resolve اور پختہ ایمان سے the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا all the challenges تمام مقابلوں کا with grace and dignity خوش اسلوبی اور پختہ عزم سے imbued with divine guidance and firm resolve the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity الہی کی ہدایات اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقابلوں کا تمام مسائل کا خوش اسلوبی اور پختہ عزم سے جواب دیا in no time he elevated man بہت ہی کم وقت میں انہوں نے انسان کو بلند کر دیا to the highest possible level جہاں تک ممکن تھا اونچے مقام پر ان بہت spiritual دونوں روحانی and worldly اور دنیاوی ڈومین ضابطوں میں بہت کم وقت میں آپ نے جہاں تک ممکن ہو سکا انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں ضابطوں میں بلند مقام پر پہنچا دیا He was also a driving force behind the Arab conquest. عرب کی فتوحات کے پیچھے بھی آپ ایک قوت کی طرح رہے which have created جس نے پیدا کر دیا تھا an everlasting نہ ختم ہونے والا impression اثر on human history انسانی تاریخ پر no wonder حیرانی کی بات نہیں ہے he is universally acknowledged انہیں تسلیم کیا جاتا ہے پوری کائنات میں as the most influential figure in the history تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت in the word of مائیکل ہرٹ کے الفاظ میں a great historian جو کہ ایک عظیم تاریخ دان تھے مائیکل ہرٹ ان کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however تاہم was responsible ذمہ دار تھے for both the theology of Islam دونوں اسلام کے نظریے کے لیے and its main ethical اور اس کے مرکزی بنیادی and moral principles اور اخلاقی اصولوں کے لیے تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نظریے اور اس کے بنیادی مرکزی اور اخلاقی اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے in addition مزید he played a key role انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا in proselytizing the new faith نئے عقیدے کو داخل کرنے میں نئے عقیدے کو مذہب میں داخل کرنے میں and in establishing اور بحال کرنے میں the religious practices مذہبی امور مذہبی اعمال in fact در حقیقت as the driving force ایک بے تحاشا قوت کے طور پر behind the Arab conquest عرب کی فتوحات کے پیچھے he may well rank as the most influential political leader of all time آپ کو تمام وقت کے سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی رہنما کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے The Arab conquest عرب کی فتوحات of the 7th century 7ویں صدی have continued جاری رہی to play an important role ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے in the human history انسانی تاریخ میں down to the present day تب سے آج تک 7ویں صدی میں عرب کی فتوحات انسانی تاریخ میں تب سے لے کر آج تک اہم کردار ادا کرنے کے لیے جاری رہی سچ آ thorough transformation یہ مکمل منتقلی of man and society انسان اور معاشرے کی owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty مقروض ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे ईमान की अल्लाह ताला पर, अल्लाह कादिर मुतलक पर, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत के लिए मोहब्बत पर, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और उनके किरदार की शराफत के लिए। ये इंसान और माशरे की मुकम्मल मुंतकली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और उनके किरदार की शराफत की मकरूज है। इंडीड, दर हकीकत हिज लाइफ, उनकी जिंदगी इज अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, जिसकी पैरवी की जा सकते। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सवाल के जवाब में हजरत आयशा said, हजरत आयशा ने कहा, हिज मोरल्स, उनका इखलाक, एंड कैरेक्टर और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद का मुजस्समा है। द फाइनल वर्ड, आखिरी अल्फाज, अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसान के दिफा के लिए, इन द होली कुरान, कुरान मजीद में है। ओ नबी, ए नबी, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको गवाह के तौर पर भेजा है, एंड एज अ बेयरर ऑफ गुड न्यूज, और अच्छी खबरें सुनाने वाले के तौर पर, एंड एज अ वार्नर, और खबरदार करने वाले के तौर पर। ए नबी, यकीनन हमने आपको गवाह बनाकर, अच्छी खबरें सुनाने वाले के तौर पर और खबरदार करने वाले के तौर पर भेजा है, एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और उसके तौर पर जो उसी की परमिशन से, उस अल्लाह की परमिशन से अल्लाह की तरफ बुलाता है, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशनी देने वाले मशअल की तरह। तो ये था आज का लेसन। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ क्लास 9 के यूनिट 1 की ट्रांसलेशन एंड होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।